So this is McClusk's pit neuron diagram. These people have proposed this. So this new artificial neural network looks like this only, isn't it? जैसे डेंड्राइट्स थे वैसे इस तरह से इनपुट आ रहा है। जो सेल है, न्यूरॉन है, वो इस तरह से है, और फिर एक्सियन इज गिविंग आउट द इंफॉर्मेशन टू अनदर डेंड्राइट ऑफ another neuron maybe, isn't it? So if you just see one neuron, then how does it look at? It gets certain inputs, various inputs, x1, x2, x3, and xn. These are the inputs. It will give certain weights to the inputs, and accordingly, it will sum up. Weight का sum कर रहा है w1 into x1, w2 into x2, है ना, wn into xn, और सब कुछ sum up हो रहा है यहाँ, and then it is giving out some equation out there, and then there is some activation function which will decide whether this neuron has to fire or not. So there is एक्टिवेशन फंक्शन, जिसका वैल्यू कोई पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होगा, थ्रेशोल्ड के ऊपर जब होगा तो आप इसको फायर करोगे, और थ्रेशोल्ड से कम होगा तो आप इस न्यूरॉन को फायर नहीं करोगे. So this is the basic design of a neuron. Okay, so these are dendrites which give you the input. This is the cell nucleus. Okay, so there are certain weights, isn't it? According to weights, certain decision is taken. Similarly, synapse, matlab, when these dendrites are getting information, so how they're working, and axon is giving the output. So we have just replicated a human neuron over here. This each input xi is weighted, so we have already talked about it. The activation level is then transformed by an activation function to produce the neuron's output. तो जो आउटपुट आ रहा है इधर से, ये जो आउटपुट आ रहा है, जो भी आप समेशन कर रहे हैं ना, जो समेशन को एज इट इज कुछ तो फंक्शन इसको आउटपुट मान लेंगे, नहीं तो क्या होगा, वो जो समेशन करके आपने जो आउटपुट रहेगा उसको किसी एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू हो जाएगा, और फिर उसका आउटपुट आगे जाएगा. तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, उसकी लीनियरिटी जो है इस पर्टिकुलर इनपुट की, वो लीनियरिटी को थोड़ा नॉन लीनियर बनाता है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं वो नॉन लीनियर ही होते हैं. ओके ओके, अगर जो वेट्स हम लोग ले रहे हैं ना, अगर वेट्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये एग्जिटरी मोशन कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, इट विल कंट्रीब्यूट. एंड अगर लेस है तो इनहिबिटरी मोशन कर रहा है. इनहिबिटरी है मतलब अगर किसी का वेट नेगेटिव है तो वो उसको रिजल्ट को नेगेटिव की तरफ ले जा रहा है, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा है. तो वेट्स का अपना एक योगदान है अपना. ठीक है, नोट दैट x1 may be external inputs. तो xi जो है, xi, x1, x2, x3, xn, कुछ एक एक्सटर्नल इनपुट भी हो सकता है, और हो सकता है किसी दूसरे न्यूरॉन का आउटपुट हो. इट कैन बी अ आउटपुट ऑफ अ न्यूरॉन ऑल्सो. ओके, fine. Okay, so you can think it as this is a neuron. Okay, so to understand the concept of the architecture of artificial neural network, we have to understand that a neural network consists of all of this. In order to decide a number of neurons, okay, in order to define a neural network that consists of large number of artificial neurons, which are termed units arranged in sequence of layers. So what are these? This is a perceptron. Okay, the number of neurons arranged in one level. Combination जो है इसको आप कहते हैं perceptron. और क्या होता है, इनका कई सारे layers हैं. तो this is an input layer. All the inputs are coming at this layer. Then there is one hidden layer. There can be number of hidden layers. Okay. Sorry, this is hidden layer 1. This is hidden layer 2, and then there is an output layer. So here you can see that when the input came, depending upon the input, a particular neuron got fired. This did not get fired. This got fired. And when its output went to the next layer, all of the 3 neurons, input went. Okay, इसका आउटपुट इसका इनपुट है इस लेयर का, तो तीनों के पास ये जो आउटपुट है वो गया, इसका इनपुट बना वो, इसका भी इनपुट बना, और इसका भी इनपुट बना, मगर ये वाला जो न्यूरॉन है वो फायर हुआ, ये दोनों नहीं फायर हुए. इसका फिर क्या होता है कि आगे इसका भी आउटपुट जो है इनका इनपुट बनता है नेक्स्ट लेयर का,
तो इसका इनपुट बना, इसका भी और इसका भी. Depending upon what was the output, this particular neuron got fired and this got fired. The output was green over here. So input layer, it accepts the inputs in several different formats provided by the programmer. The hidden layer uh, presents a presents in between input and output layers. It performs all the calculations and find the hidden features and patterns. The output layer, the input goes through a series of transformation using the hidden layers, which finally result in the output that is conveyed using this layer. The artificial neural network takes input and computes the weighted sum of the inputs and includes a bias in it. So whenever you do a weighted input, as you can see in the expression given below, you can see that weights हैं और xi का वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया ना यहाँ वेट्स, और उसके बाद एक हम बायस को भी ऐड करते हैं इधर. जब टोटल कर लिया आपने इसको, you are doing a adding of bias also. We'll see why this bias is used in the coming slide. Okay, it determines the weighted total. Okay, fine. I think you can read through it. I've already spoken about it. Okay. सो बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं इसके बारे में बता रहे हैं. परसेप्ट्रॉन, परसेप्ट्रॉन क्या है? ये पूरा जो लेयर है आपका, ये पूरा आपका दिस कंप्लीट वन लेयर इज द परसेप्ट्रॉन. ओके, सो यू हैव इनपुट्स x1 x2 x3 इनपुट है, वेट्स हैं w1 w2 w3 वेट्स हैं. एक बायस ऐड हो जाता है जब आप इसको ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं तो. देन समेशन फंक्शन है यहाँ. देन यू हैव एन एक्टिवेशन. सो देन जो समेशन होने के बाद आपके पास एक एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू वो गुजरता है. इट टेक्स into account the threshold. Depending upon the threshold, this particular thing will maybe fire ahead or it will not fire ahead. Okay. Bias is used to shift the activation function towards the left or right. It can be referred to as the y-intercept of the line. तो जो बायस होता है ना, इसमें इनपुट तो समझ में आया होगा आप लोगों को और आउटपुट भी. बायस क्या होता है? जैसे कि ये जो इंटरसेप्ट होता है ना, वाई इंटरसेप्ट, बायस विल हेल्प द इंटरसेप्ट टू मूव अप और डाउन. ओके, जस्ट एडजस्ट दिस. ओके, और भी आगे देखेंगे इसमें सिग्मॉइड फंक्शन में बायस किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है. आई थिंक यू कैन जस्ट एक्टिवेशन फंक्शन का क्या काम है? जो लीनियरिटी है फंक्शन की, आपने x1 मल्टीप्लाइड बाय w1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय w2 इस तरह से किया आपने, तो एक लीनियरिटी आ गई उसमें. So to just avoid that linearity, we have this activation function, so that it lets us map to the real world. So various activation functions are there depending upon what kind of a project you are doing. You may pick up from them. Is it okay? So inputs, weights, summation function. A bias gets added to the summation function, the activation function. Activation function will just get rid of this non-linearity of this particular model. I hope this is okay. Like there is a vector x1 x2 xn, क्या है? एक वेक्टर ही है, और हर एक वेक्टर के हिसाब से इनपुट को एक वेट मिला हुआ है ना. तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना. In your books, most of them, it is written like this. So what it is, x raised to t multiplied by w. What does it mean actually? It means this only, what we have done. x1 multiplied by w1 plus x2 multiplied by w2 till this. And this can also be written as this expression out here. जैसे कि example, you are going to buy a car. If you want to buy a car, maybe you look, or will you look at? You'll go, you'll also see cars को buy करने से पहले बहुत सोचा होगा ना आपने कि भाई ये कार बाई करनी है तो कौन सी कार लें. उसका प्राइस भी, बजट भी देखना पड़ेगा आपको. तो ये मेजर दो फैक्टर्स है. ओके, what is the price of the car, what is the popularity of the car. Okay, these x1 and this is x2. Now
uh, depending upon what is this input, it will negatively or positively impact your decision of taking a buying a car. If you say buying a car, the price of the car is going to be inversely proportional, isn't it? And the popularity of the car is directly proportional. Okay, so you may attach some weights, negative weights to the price. जैसे जैसे price बढ़ेगा, maybe you will not want to buy that particular car because everyone has a budget. Okay, whatever is the budget, if it goes beyond that, you will not buy the car, isn't it? But the popularity, the most popular for the same price the car is, maybe you'll buy that particular car or that particular color of the car or something like that. So we are only having uh, two variables, x1 and x2. So what you have to do is that you attach a negative valued weight to something that is inversely proportional. Okay. So if the price of the car increases, then the expression value also increases. This means we are more likely to buy that car. But we do not buy that car. It doesn't happen like that, isn't it? So to compensate this, what we do is we add a negative valued weight. नेगेटिव वैल्यूड वेट W1 को बना देंगे आप, तो क्या, तो आप इस तरह की जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं उनको आप डील कर सकें. इज इट फाइन? सो हियर आप अगर इस केस में देखें तो देयर इज x1 इज प्राइस, x2 इज पॉपुलैरिटी. बस यही दो चीजें हैं आपके इस पे सबट्रॉन में. आपके पास वेट 1 और वेट 2 है, जिसमें वेट 1 विल बी नेगेटिव एंड वेट 2 विल बी पॉजिटिव. ओके, now you have already looked into the sigmoid function when we looked into this thing ना, logistic regression. तो क्या होता है कि अगर आपने बायस नहीं ऐड किया ना, अगर जैसे ये एक्सप्रेशन है आपका, ये यहाँ से जो एक्सप्रेशन आया ना इधर से, सपोज कीजिए W1 प्लस प्राइस ऑफ द कार, W1 मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ द कार x1 plus W2 multiplied by the popularity of the car, that is x2, plus the bias. Now, this expression you are getting from this example, right? Now, ये जो एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है, आप अगर उसको एक सिग्मॉइड फंक्शन में इस तरफ से प्लेस करेंगे, आप जानते हैं आप लोगों ने जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन को किया था, तो इस एक्सप्रेशन को जब आप यहाँ प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा जो फंक्शन है, ये जो रिजल्टेंट वैल्यूज आएगी एनीथिंग बिटवीन 0 to 1. ओके, सो आपका जो सिग्मॉइड कर्व इस तरह से 0 से लेकर और ये 1 तक इस तरह का एक सिग्मॉइड कर्व बनेगा. ठीक है. नाउ अगर आपका बायस, अब ये W की वैल्यू को कितना भी बढ़ाएंगे ना, कितना भी बढ़ाते जाएंगे ना, तो क्या होगा, आपको ये अलग अलग ये कर्व्स मिलेंगे, ये ब्लू वाला, उसके बाद ये ऑरेंज और उसके बाद ये ग्रीन, इस तरह से आपको कर्व्स मिलेंगे. मगर आप देखेंगे कि ये जो सेंटर पॉइंट है ना इसका, ये ऐसा ही रह रहा है. इट इज जस्ट मीट, ऑल ऑफ देम आर मीटिंग ओवर हियर. ये क्यों है? क्योंकि बायस जो है वो सेम है आपका. कितना भी वेट को बदलेंगे आप तो भी ये इसी तरह से मिलेगा. इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट ओवर हियर. So if you really want this to shift a bit, shift from this position, then you have to add a bias. Because in real life what happens with the value of x increasing, maybe it will not just always behave like this. Maybe x की value, सपोज यहाँ 10 है तो वो कुछ y की वैल्यू कुछ और होनी चाहिए, और जब यहाँ पहुंच रही तो कुछ और होनी चाहिए. जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो x की वैल्यू कुछ और बदल जानी चाहिए, और यही रियल लाइफ में होता है ना. तो ये बायस इज हेल्पिंग अस मूव द सिग्मॉइड कर्व फ्रॉम दिस ओरिजिन प्लेस. So this is what is the significant contribution of bias. So maybe we can just see what kind of a bias that we add. It is replicating our case, and accordingly accept that bias and use it. Threshold is something, once you are getting an expression, वो आप कर रहे हैं x1 multiplied by w1, x2 multiplied by w2, सबको ऐड कर रहे हैं. उसके बाद आपको एक लीनियर फंक्शन मिल रहा है, और उसको now you want to pass through the activation function. अब आप देखना चाह रहे हैं कि what is the output of it, isn't it? So the node's internal threshold, theta बोल सकते हैं या phi बोल सकते हैं, is the magnitude offset. It affects the activation of the node y. So whether this will fire or not depends upon this threshold. Okay, so summation that you have done minus the threshold. To generate the final output, the sum is passed to the non-linear filter f.
called the activation function, or also called the transfer function, or also called the squash function, which releases the output of y. So what is the threshold? Accordingly, it will fire or not fire, huh? Release the output of y or not. That depends upon the threshold. The thresholds can be adjusted depending upon what program are you doing. And now these can be actually replicated, done with these gates. तो x और y सपोज ये x1 है, ये x2 है, 1 1 है तो आउटपुट 1 है, 1 0 है तो ये 0 है. तो इस तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं. आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस. एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं अवेलेबल. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन इज टू परफॉर्म अ मैपिंग ऑफ द वेटेड sum upon the output. The transformation function comprises of activation functions जो कि कुछ इस तरीके की हैं, tanh, relu, sigmoid, etc. The activation function is categorized into two main parts: a linear activation function and non-linear activation function. Let's look at them. As you know, if you get an output as a linear output, the range of this can be anything from -infinity to infinity, isn't it? So in linear activation function, the output of the function is not restricted in between any range, and its range is specified by -infinity to infinity. For each individual neuron, the inputs get multiplied with the weights of each respective neuron, which in turn leads to the creation of an output signal proportional to the input. If all the input layers are linear in nature, then the final activation of the last layer will actually be linear, a function of the initial layered output. So you may want to go for it or may not. Maybe you want to convert this linear function into non-linear, depending upon your program. You can have also a non-linear function. You already have seen that, na? A polynomial हो सकता है, cubic हो सकता है. You can have this kind of a linear functions also, non-linear functions also. क्यों आपने नॉन लिनियरिटी को देखा था? अगर आप ध्यान रखें तो हम लोगों ने पढ़ा ऑलरेडी. In such kind of a case, now if you draw a line over here, linear function बनाएंगे, तो you cannot, maybe you make a line over here. What happens? There are certain things that are misclassified. So what you will want to do something called a non-linear thing. So a line from here to here you want to make, isn't it? To differentiate between the two classes. So this we have already studied in linear functions. So this example, this line is actually not doing a good job, isn't it? So we want a non-linear into it. We have already looked into it, so just move ahead. So what are the activation functions that are available? Commonly activation functions that are used are linear function, threshold function, piecewise linear function, sigmoidal function, and tangent hyperbolic functions. Activation function performs a mathematical operation on the signal output. The most common ones are these. The activation functions are chosen depending upon the type of problem we will be solved. So what type of a problem? Accordingly, you will decide upon which of these activation functions you want to use. आइडेंटिटी फंक्शन होता है एक इसमें एक्टिवेशन फंक्शन में. आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये है जो आ रहा है उसको ऐसे कैसे ले लेने का. That is what is so what you are getting as y, you are taking it as y means y क्या होता है? ये जो आ रहा है ना, आउटपुट आ रहा है आपका जो x1 मल्टीप्लाई बाय w1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय w2, जो वैल्यू आपको आ रही है, दैट लीनियर फंक्शन यू टेक इट एज इट इज. एक्टिवेशन फंक्शन उसको कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहा है, तो उसको आप कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. सो वाई इन क्या है? ये पर्टिकुलर जो जगह है, दिस स्पेस आफ्टर विच यू गेट दिस इनपुट आउटपुट ना, इसका जो आउटपुट है, जो एक्टिवेशन फंक्शन का इनपुट बनने वाला होता है, उसको बोलते हैं वाई इन. ओके, वाई इन और यहाँ ये वाई. The y-in is something that goes as an input to an activation function. Okay, so identity function. The activation output of a neuron is exactly the same as the weighted sum of the input. As we will see later, activation functions are used for neurons in an input layer of the ANN. So it is, you're not changing it anyhow. दूसरा आता है आपका this kind of a stepwise function. Step function इसको कहते हैं.
Over the years, researchers tried several functions to convert input into output. Then the most commonly used functions are described here. Input is on the horizontal axis, shows the sum of input. Output is on the vertical axis, shows the value of the function produced. अब इसका जो output है वो क्या है, 0 या 1 है ना. x का वैल्यू जो भी बढ़ रहा है आपका, घट रहा है, जैसे भी x का वैल्यू रहे, आपका y का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 नहीं तो 1 हो रहा है. So this is what is a step function, and this is called a binary step function. When is this value 0 and when is this value 1? When the value is greater than 0, when this I value, the input, is greater than 0, the output will become 1, and it is less than 0, the output will become 0. So this is called a binary threshold, uh, binary step function. Output of a binary threshold function produces 1 if the weighted sum of the inputs is negative, and 0 if the weighted sum of the inputs is, positive and negative. Okay. Then there is something called a bipolar function. If you see the bipolar function, what happens? The value over here is 0 or 1, isn't it? But in this case, it is going to negative. So in the bipolar step function, the value is -1, 0 or 1. So when is it 1? If the weighted sum of the input is positive. When it is negative, when the weighted sum of the inputs is negative. Otherwise, it is some value maybe. Okay. Then is something called a piecewise linear function, wherein you can see a slope over here. That is the only difference here. So you can maybe attach some probability to it, in fact. So this activation function is also called saturating linear function, and can have either a linear or a bipolar range for saturation limits of the output. It's -1 for a negative weighted sum of inputs, 1 for a positive weighted sum of the inputs, and proportional to some I. So you can say it is having some maybe probability included in it. Okay, this is what is a piecewise linear activation function. And there is something called a sigmoid activation function. इसमें क्या कर रहे हैं आप, ये जो y in है, y in का जो expression है, उसको आप यहाँ sigmoid curve में डाल रहे हैं. तो उससे क्या होगा? It will be any value from 0 to 1, but there is a slope in between. Okay, there is a slope, and you can see depending upon the alpha value, the slope will differ. So we have already looked at this in the logistic regression. Okay, so you'll calculate y in. So what is y in? x1 multiplied by w1 plus x2 multiplied by w2 plus the bias. That expression you are going to place over here. जिस तरह से हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में किया था. ठीक है, इसको यहाँ प्लेस करेंगे. तो जब भी ये एक्सप्रेशन के साथ आप करते हैं तो क्या होगा, y की वैल्यू 0 या 1 के बीच में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. जो भी वैल्यू रहे इधर, ये जो y की वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और उसके कारण आप इसको क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay. So this we have already looked into logistic regression, so it should not be a problem. So this kind of a binary sigmoid function can be used, जिसमें कि 0 है और 1 है. इसी तरह से bipolar sigmoid function भी है, wherein you will see that it has a negative value and goes to a positive value. And इस तरीके का जब भी आपका फंक्शन रहेगा तो उसका एक्सप्रेशन इस तरह से दिखेगा. Can you see the difference between the two? कुछ इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो कुछ और भी एक्सप्रेशंस बुक्स में होता है. तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अगर इसको यहाँ इसको पूरा एलसीएम ले लेंगे तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है सिंप्लीफाई करके. तो ये है बाइपोलर. बाइपोलर से मतलब है 0 से लेके 1 तक नहीं है सिग्मॉइड के जैसे, ये -1 से लेके 1 तक है. ये एक्चुअली इसका ओरिजिनल एक्सप्रेशन tan h इस तरह से है, मगर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इस तरह से नजर आने लग जाता है. एंड वी रिक्वायर यू टू जस्ट लर्न दिस बिकॉज वी हैव सम क्वेश्चंस कमिंग अप जिसमें कि आपको ये एक्सप्रेशंस को यूज करना होगा. सो आई होप यू आर एबल टू सी व्हाट इज अ बाइपोलर सिग्मॉइड फंक्शन. तो आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपका x1 x2 वेट आप इनपुट दे रहे हैं, यू आर हैविंग सर्टेन वेट्स देयर, यू आर पुटिंग इट टू द न्यूरॉन, यू आर गेटिंग अ एक्सप्रेशन. Now you're passing it through this bipolar sigmoid function or a
binary sigmoid function, and then what are you getting? A number between -1 to 1 or 0 to 1. Now you can take decisions on that, है ना? You can take decisions on these values. ओके तो ये जितने बताए उतने ही नहीं है, बहुत सारे और भी एक्टिवेशन फंक्शंस हैं. इनको ये जो एक्टिवेशन फंक्शन आपने देखा था, ये जो इसको ना स्टेप वाला, इसको बोलते हैं हार्ड लिमिट. ओके, 0 से लेके 1 के बीच में. ये सिमेट्रिकल हार्ड लिमिट क्या है? -1 से 1 के बीच में. दिस इज लीनियर. सो देयर आर सम many ऑफ these, many more of these logistic log sigmoid functions also there. Some more are there, but we just told you some of them, just described some of them. Now over here, this kind of question is there. Very simple questions are there. इसमें क्या है? x1 का input आ रहा है 0.3, 0.5, 0.6. ठीक है, ये input आ रहा है, तो आप इसको कैसे solve करेंगे? तो ये input है x1, x2 और इसका x3 का, और ये weights है. तो आप किस तरह का एक्सप्रेशन आएगा? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, -0.3 मल्टीप्लाइड बाय 6. ये आपका ये समेशन का रिजल्ट होगा. ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, ये क्वेश्चन को? x1, x2, x3 का वैल्यूज क्या है? 0.3, 0.5, 0.6. ठीक है, वेट्स क्या है? 0.2, 0.1 माइनस 0.3. अब आप क्या कर रहे हैं? इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. y इन का वैल्यू क्या है? y इन का वैल्यू है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1. दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y in.